हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन स्टडी विद इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। आज हम केमिकल काइनेटिक का आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आफ्टर दैट विल सी द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद में हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। Rate law are very important for beginners of the competitive exam also and board point of view also, because small MCQs will asked based on that equation। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं केमिकल काइनेटिक के, तो इसी इक्वेशन पे यानी रेट लॉ का के इक्वेशन या फिर टी इक्वेशन या फिर टी हाफ इक्वेशन, इस पर ही आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। सो हाउ वी विल गेट दैट रेट लॉ। ठीक है, आज मैं ये बताऊंगी पूरा डिस्क्रिप्शन थेरी पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज लिसन इट केयरफुली एंड लाइक इट एंड शेयर इट टू द नीडी स्टूडेंट्स एंड subscribe it. Okay, next portion is zero order reaction. In such reactions, the rate remains constant throughout the course of a reaction. That is, the rate does not change with change in concentration of the reactant. ठीक है, मिस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना भी चेंज कर लो। अब ये समझने के लिए हम देखते हैं आ, कुछ एग्जाम्पल। पहले तो हम लिखते हैं कि रेट कैसे होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। दैट इज रेट इज इक्वल्स टू क्या है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर जीरो, which is equals to rate is nothing but K only, because independent of the initial concentration means concentration of the reactant totally zero है, therefore rate क्या आया हमारा, rate constant। अब इसके लिए हम consider by some example हम क्या लेते हैं, H2 plus Cl2 in presence of H nu will get twice HCl। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल हमारा HI का है। टू molecule of HI is decomposed in presence of gold surface, so we'll get H2 plus I2। ठीक है, देन है हमारा अमोनिया। टू molecule of ammonia is decomposed in presence of nickel, so we'll get N2 plus thrice H2। ठीक है, now see in all these are the zero order reaction, but zero order है but reactant तो कुछ ना कुछ है। ठीक है, और उसमें से कुछ कंज्यूम भी हुआ होगा, तो zero order कैसे हो गया। Now see, the first one is the photochemical reaction, which is always considered as a zero order reaction, और second और third तो देखो, it is a rate, zero order reaction is always carried out in presence of catalyst, especially metallic catalyst we are using। ठीक है, and that time when the reaction is going on, that time some fraction of the catalyst reactant are covered on the metallic surface of the catalyst when the reaction is going on। ठीक है, some fraction, not a completely it is not covered। कुछ fraction आपका reactant जो भी लिया है, कुछ convert हुआ है, कुछ paste हुआ है, covered हुआ है metallic catalyst के ऊपर में। तब तक rate of the reaction behaves as a first order reaction because it's directly proportional to the concentration of reactant। ठीक है, बट वेन एवर इफ वेन आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम जब फर्स्ट ऑर्डर दिखाता है तब तक वो कवर होते रहता है, बट वंस वेन इट इज फुल्ली कवर्ड, उसके बाद में कितना भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर कवर होता है तो रेट ऑफ द रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता, तो दैट टाइम वी कैन इजिली से दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, एंड इन सच केस रिएक्शन बिहेव्स एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जिस टाइम में रेट रिएक्शन का कोई भी रेट अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे इंडिपेंडेंट नहीं है, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, देन दैट टाइम द रिएक्शन इज कंसिडर एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमारी रिएक्शन क्या कंसिडर हो रही है, जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो ये पूरे कवर होने के बाद, ये पूरे मेटेलिक सरफेस कवर होने के बाद रिएक्टेंट से कितने भी रिएक्टेंट अगर पेस्ट हो रहा या कवर हो रहा मेटेलिक सरफेस पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेटल्स को या कैटलिस्ट को, उस टाइम में रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू के ओनली, कॉन्सेंट्रेशन पावर कितना रहेगा, रिएक्टेंट रिएक्टेंट का पावर कितना रहेगा, जीरो। So that time rate is equals to K only।
Okay, so that is the condition, and that time reaction behaves as a first order reaction. Okay, now again one more thing here, तो our topic is complete. Today's video is over. नाउ अगर आपको ये पूरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल कम अगेन। ठीक है, जेई का फर्स्ट फेज हो गया, लेकिन बाकी सारे एग्जाम बाकी है। सारे बच्चों को जो भी ट्वेल्थ में है उन सब स्टूडेंट्स को ये सारे वीडियोस काम में आएंगे। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल दोज आर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज शेयर इट टू द नीडी स्टूडेंट्स। Okay, thank you. Like it and subscribe my channel again. Okay, now integrated rate law for zero order reaction. For to understand this, we'll consider some reaction and then we'll try to understand how we can integrate the rate law. Okay, now consider one general reaction. R gives product. Okay, this is a one general reaction. Now rate of this reaction, how we can write it? D concentration of R upon dt is equals to minus k into concentration of R raised to power 0. Okay. And because why we wrote here 0 raised to power 0? Because this is a zero order reaction and rate of this reaction is independent of the concentration of the reactant. That's why we wrote minus k concentration of reactant raised to power 0. After that we will write d upon dt concentration of R is equals to minus k, because R raised to power 0 is 1. Now after that we will write d concentration of R is equals to minus k into dt. Now integrate this equation on both the sides. So what we will do, integration sign, after that integrate left hand side, after that minus, then integrate k into dt. What we will get here, concentration of R as equals to minus k t plus c, which is a constant of integration. We'll put some equation here, equation number a, because we will need this equation in next time. Later on we apply some condition. Okay, so what is that condition? Again I will make a two column of this board. Okay, and apply the condition. What is that condition? If t equals to 0 means now only reaction starts, so concentration of R will be a concentration of initial concentration, that is R naught. Okay, apply this condition and substitute this condition in equation A. So what we will get, concentration of R naught is equals to minus kt, k into 0 plus c, that is the only c. Okay, now this is the equation number B. Now substitute equation B in equation A. What we will get, substitute B in A. What we will get? A is where A is. Okay. Now concentration of R is equals to minus K T plus concentration of R naught. This is our equation, which is most important. Again, this equation we will rearrange. KT is equals to concentration of R naught minus concentration of R. Only we rearrange this equation. After that, if you want the equation in terms of K, that is a rate constant, we will again rearrange minus concentration of R naught minus R upon T. That is also the equation. And again, if you want in terms of T, again rearrange concentration of R naught minus concentration of R upon T. Here we did this one. This is wrong. This is correct. Now this is a very important equation, very important. But we will, for graphical representation, we need this equation. Very important. Okay. So this is the rate law for zero order reaction. Now we'll see the graphical representation. Now we'll see the graphical representation of zero order reaction, and for this we'll consider the equation, and that is a rate equation.
And for this again, we'll consider Kt is equals to concentration of R minus concentration of R. This is R naught. Now rearrange this equation. So what we will get, concentration of R is equals to minus Kt plus concentration of R naught. This is our equation. Now compare this equation with the equation of straight line y is equals to mx plus c. Okay, so if we compare these two equations, what we will get, m is nothing but the slope, which is equals to minus m, and intercept, क्या मिलेगा हमें intercept, that is concentration of R naught. Now we'll plot a graph here. This is our x-axis. This is our y-axis. Now on y-axis, concentration of R. So we'll write here concentration term here. And in this side, we'll write x is nothing but a time. So we'll write here time axis. So when we plot a graph, we'll get this graph of straight line, straight. Here it is not straight, but straight line we will get, and this will be the intercept on y-axis, that is the concentration of R naught, and slope of this line will be minus k. Now for half-life of zero order reaction, for this again we'll consider the equation Kt. Kt is equals to concentration of R naught minus concentration of R. Okay, now T is equals to what? Again, we rearrange concentration of R naught minus concentration of R upon K. Okay. Now apply one condition. When T is equals to T half, then concentration of R was equals to reduced to half of the original value. Okay. So this is R naught upon 2. Now apply this condition in equation C. So what we will get, T half as equals to concentration of R naught minus again concentration of R naught upon 2, okay, upon K. After solving this, we will get concentration of R naught, because twice R minus R naught, that is a single R naught, upon twice K as equals to T half. Okay. Now here again compare this y is equals to mx and plot a graph. Consider the straight line on x-axis also and y-axis also, and mx means what? Here we will get a straight line, but what we will plot here on x-axis equals to concentration of R naught, and y-axis equals to T half. Okay, and slope of this line will be 1 upon 2k. That is the graphical representation of half-life of zero order reaction. Okay, students, now after discussing all the terms related to zero order reaction, उसकी definition, integrated rate law of zero order reaction, after that what we saw, T half of the zero order reaction, graphical representation of zero order reaction, अब all these terms ये सब आज हमने देखे हैं आज के वीडियो में. अभी now I request to every student, those are watching my channel, please like it, share it also to needy students, those are watching my channel, and subscribe it.
और मैं आशा करती हूँ सारे स्टूडेंट्स को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और उनकी स्टडी समझ में आ रही होगी काइनेटिक्स की, बिकॉज इट इज़ अ वेरी टफ टॉपिक। सो मैं उसको इजीस्ट वे से आपको बताना चाहती हूँ कि क्या रेट इक्वेशंस होते हैं, काइनेटिक में स्टडी किस चीज़ की आती है, टर्म्स कौन से आते हैं। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।